तिलक लगा के मिट्टी का तू पासी आज लगा ले, ओ तिलक लगा के मिट्टी का तू पासी आज लगा ले, तुझ में जो चिंगारी है उस शोला आज बना ले। जान लगा के खेल खिलाड़ी, ओ जान लगा के खेल खिलाड़ी, साथ हमेशा स्पोर्ट्स इंडी, शान बढ़ा तू रहे अगाड़ी, जीत की भाषा स्पोर्ट्स इंडी। What's up, people? This is Vishal Kapadia, and we are back again with another episode of Sports Indie Presents World of Sports, produced by Meeti Group. तो और जैसे हम सब देख ही रहे कि इतने पास्ट एपिसोड्स में हम गेम्स के बारे में बात ही कर रहे थे, एंड लास्ट एपिसोड में हमने ऐसी गेम्स के बारे में बात की जो शायद हर कोई बात नहीं करता एंड उतना वैल्यू नहीं होता क्योंकि वो बचपन में खेली जाती है। बट वही चीज के बारे में हम आज जानेंगे डिटेल्स में, दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट चाइल्डहुड गेम्स व्हिच आर पॉपुलर टुडे आल्सो। ये शायद हमारे लिए बहुत ज्यादा आगे आ गए हम क्योंकि हमारी एज की वजह से, बट ऑफ कोर्स फॉर चाइल्डहुड गेम्स वी विल डू दैट। बट टुडे फॉर दैट वी हैव आवर स्पेशल गेस्ट जो हमें एक्सप्लेन करेंगी इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, Kirti Sawaikar, founder member of Lagori Association of Goa, secretary of Amateur Ropes Keeping Association Goa. Hello, ma'am. I think मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है आज की एपिसोड से, बिकॉज मैंने आपके बारे में रिसर्च की थी एंड जो नॉलेज आपके पास है आई डोंट थिंक सो कोई हमें और दे पाएगा। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच मैम। सो मैम एक्चुअली आई विल टेल यू द ब्रीफ थिंग, हम हर एपिसोड में हम अलग अलग डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। हमारे लास्ट एपिसोड में हमने चाइल्डहुड गेम जो होती है जैसे लगोरी हुआ, रोप स्कीपिंग हुआ, जो आप जिसमें आपकी स्पेशलिटी है, वैसे अलग अलग गेम्स के बारे में। बट आज हमें मजा आने वाला है क्योंकि हमें इस चीज के बारे में जो हमारी दो गेम्स हमें डिटेल्स में जानने मिलेगी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी दैट मैम, लगोरी हुआ जैसे स्कीपिंग रोप हुआ, मैम ये जब हम चाइल्डहुड में हम खेलते थे, जैसे एक छोटे बच्चों के लिए एक बेसिक गेम रहता है जहाँ पे कोई ऐसा रूल्स या रेगुलेशन नहीं होता, बट जो दोस्त बोलते हैं उस हिसाब से ही चाइल्डहुड में हम खेलते हैं। मैम इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? लाइक मुझे आज तक ये सवाल रहा है दैट जब हम बचपन में ये खेलते हैं, हाउ इट बेनिफिट्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ द गेम्स इन द चाइल्डहुड एज व्हेन अ चाइल्ड प्लेज दैट। मैम उनका म्यूट, ma'am, I think so your mic is muted. Is that okay now? Yeah, perfectly okay. Fine. जैसे आपने बोला कि ये गेम्स हम चाइल्डहुड से खेलते हैं। बेसिकली हम गेम्स क्यों खेलते हैं कि हमारे खुद के एंटरटेनमेंट एक चीज़ है, हमारी हॉबी होती है वो दूसरी चीज़ है। तीसरी ये चीज़ है कि स्पोर्ट्स से हम कनेक्ट होते हैं, वी गेट सोशली कनेक्टेड। एक्चुअली वी नो हाउ टू बी इन अ टीम, हाउ टू वर्क फॉर अ टीम। तो एक्चुअली कैसा है कि ये जो चाइल्डहुड गेम्स हम बोलते हैं और ये गेम्स हम खेलते हैं, लेकिन जो पॉपुलराइज गेम है, फीचर्ड गेम्स हैं, लाइक क्रिकेट, अभी तो कबड्डी भी हो रहा है, उसको अच्छी पॉपुलैरिटी मिल रही है, फुटबॉल, हॉकी, ये तो अभी फीचर्ड गेम्स हैं। लेकिन हमारे ये ट्रेडिशनल गेम्स जो हैं वो भी वही चीज़ें इनकलकेट करती हैं एक बच्चे में, हाउ वी शुड हैव अ टीम कोऑर्डिनेशन, हाउ टू कम टुगेदर एंड प्ले फॉर वन मोटो और वन गोल। तो बेसिक जैसा स्पोर्ट्स में व्हाई डू वी प्ले फॉर आवर एंटरटेनमेंट, एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड और अ पर्सन। तो मैम जैसे आपने ये ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में बात की, मेरा सेकंड सवाल आपसे यही होगा, इसी बारे में होगा दैट जैसे हमारे इधर मुंबई हो, इंडिया हो, पूरे देश में
बहुत सारी पॉपुलर गेम्स अभी हो रही है, पहले तो क्रिकेट तो था ही, जैसे आपने कबड्डी की भी बात की। जब आपने ये दो गेम्स चूज किया एज अ करियर पाथ, लाइक चलो स्किपिंग रोप हो गया, लगोरी हो गया, दिस आर ट्रेडिशनल गेम्स, और जो भी आज की जनरेशन में होगा मैम, वो इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा हमारी ट्रेडिशनल गेम्स के लिए, जो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैम आपने वो चूज किया, आपने उसमें यू मेड आउट करियर आउट ऑफ इट। वो कैसे, मतलब वो कॉन्फिडेंस कैसे आया आप, वरना आप भी दूसरे लोगों की तरह पॉपुलर गेम्स में ही जा सकते थे, बट यही गेम्स क्यों? हाँ, बेसिकली आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर माय स्टेट एक्चुअली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ओहो। या आई हैव प्लेड क्रिकेट। और हमें पता है कि फिटनेस के लिए जो भी गेम हो, एक वार्म अप के लिए हम स्किपिंग चूज करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम स्किपिंग करते हैं। कोई भी गेम हो, ये जो बॉक्सर्स है, जो बैडमिंटन प्लेयर्स है, जो रेसलर्स है, क्रिकेट प्लेयर्स है, बैट्समैन, हम देखते हैं कि बैट्समैन जब बैटिंग के लिए जा रहा होता है तो पहले वो वार्म अप, ही वार्म्स अप विद द स्किपिंग रोप। ओके, तो आई केम अक्रॉस इट एक्चुअली इन 2004, जब मुझे ये स्किपिंग रोप के बारे में पता चला। और हमें बेसिकली पता है कि हम एक जंप करते हैं या सिंगल डच बोलते हैं उसको, वो करते हैं, उसमें बहुत सारे skills है एक्चुअली। देयर आर मोर देन 700 skills इन स्किपिंग रोप एक्चुअली। और जैसे मैंने भी रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि अमेरिका में ये बहुत इट इज डन ऑन द लार्जर स्केल। सो वी वेंट अक्रॉस एंड फ्रॉम दिल्ली वी गॉट कनेक्टेड टू द फेडरेशन, और ऐसे हमने वो स्टार्ट किया एक्चुअली। सीखा तो वीडियो देख के ही था। मैम सो जैसे आप इतने 700 स्किल्स के बारे में भी आप खुद, अभी हमको तो इतना पता भी नहीं था, हमें सिर्फ लगता था दैट एक रोप लेके जंप करना ही स्किपिंग होती है। मैम स्किपिंग पे तो मैं आऊंगा ही, बट मेरा नेक्स्ट सवाल आप पे ये रहेगा कि दैट यू आर ऑल्सो द फाउंडर मेंबर ऑफ लगोरी एसोसिएशन ऑफ गोवा एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी मैम। तो पहले मैं आप लगोरी पे आता हूँ कि मैम लगोरी एसोसिएशन में हाउ इट वर्क्स, आप कैसे वहां पे काम करते हो, और आप कैसे लगोरी को प्रमोट करते हो? चलो स्किपिंग तो एक ऐसी बेनिफिशियल चीज है जो हमको अभी भी यूथ में, हम जिम में जाए या किधर भी जाए हम करते हैं, बट लगोरी हम जिम में नहीं खेल सकते। नहीं तो हाउ डू यू प्रमोट दैट गेम? यस, एक्चुअली मुझे खुद ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया में बहुत इंटरेस्ट है, and I have been reading over it. There are many books which I have read. और यहाँ पे I am basically from Goa, so there are some books in Goa also. Some writers have written the books. So इस उसी interest से मैं when I was going through, I was browsing, I was searching, I came across Lagori Federation of India, which was run from Maharashtra. So when I, yeah, from Maharashtra, one person called Gurau, Mr. Gurau, he's no more now, his brother is looking after all these things. तो उनको मैंने कांटेक्ट किया। सिंस एक तो इंटरेस्ट था ही, किसी भी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप यू गो फॉरवर्ड टू सर्च ऑल दोस थिंग्स। सो सिमिलरली मुझे भी ऐसे भी लगा था, क्योंकि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड वी यूज्ड टू प्ले विद दोस प्लास्टिक थिंग्स और द whatever we get, 7 things, okay, 7 stones, it is also called as 7 stones, पिट्टू भी बोलते हैं उसको। तो मुझे ये भी पता चला कि they have formulated some rules and regulations of the game. So then I gave a thought, like the way we have langadi, the way we have kabaddi, the traditional games of India, there is ample scope to get the students back to the games which we are played. If you speak of Lagori, it is found in Bhagavad Puran actually. It is said that Oh. Lord Krishna was playing this game. There is a reference in Bhagavad Puran also of this game. Ma'am, how do you promote this game? Like association, no doubt it is a very big thing that जो चीज आपने महाराष्ट्र में देखी, आपने अपने स्टेट में वो लाई, वो इम्पोर्टेंस आप बता रहे हो जो शायद आज के लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं है, बट अगर आपके नॉलेज से हमारी ऑडियंस या हमारी यूथ अगर ये प्रमोट करना भी चाहिए गेम्स, तो वो कैसे करेंगे मैम? आपकी एक थोड़ी सी Basically, गाइडेंस। in Goa, how we go about it, that is important. Since Goa is a very small state, we have around 500 schools. So I concentrated on the schools, school level.
Yes, instead of going directly to the senior level, we concentrated on the age group of 10 to 16, so that we can go to the schools, or we can call some 8 to 10 schools at one place on one ground, and we give a demonstration of that particular game, and then we have some coaching camps and all those things. It was like that. And ma'am, my same question goes for the skipping thing also, that you are also the secretary of, I think so, yeah, secretary of Amateur Rope Skipping Association. Like, Yes. ye journey kaise? Like, Lagori and also this. So, See, just I wanted to have some knowledge about it. yeah, yeah. Yes, I've told you that I personally have interest in traditional games. So maybe Okay. some two more games we will add. It is, see, the thing is, everything is not commercialized. You know, everything you cannot make commercialized. There are certain things which come out of passion. So, passion of uh, taking more knowledge about the traditional games and getting the children back to those traditional games, because nowadays जो दिखता है वो बिकता है. So whatever you see IPL and now Kabaddi is getting promoted only because of the league matches which are going on. So there are certain things which we need to show the today's generation that even such games can also be exciting, not only cricket or hockey or football like that. इसके तो मैम हमने ये एपिसोड लाया है, सुप्रिया मैम का यही तो एम है, जो चीजें एंड जो गेम्स अभी तक यूथ को नहीं पता चली है, एंड इसी वजह से हमने ये एपिसोड लाया, और आप ही हमारे गेस्ट हो, एंड आपके ही थ्रू क्या पता इतनी सारी ऑडियंस है और उनको भी पता चले। मैम, चैलेंजिंग कौन सा रहेगा, दैट बीइंग द फाउंडर ऑफ एन एसोसिएशन और बीइंग अ सेक्रेटरी? चैलेंजिंग मतलब चैलेंजेस तो आते रहेंगे, राइट? आप दो चीज Challenge. एक साथ मैनेज कर रहे हो, तो चैलेंजेस क्या Basically, क्या what होता है? I feel is starting anything is not challenging at all. It is very easy. बड़ी बात कर दी Continuing the मैम। thing is more challenging. You need to continue that. Consistency is more challenging than starting. You can start up anything. There is no issues. There are no issues when you start up anything. But you need to continue the same, having the same consistency. That is more important. Because you एंड need the basic support. एंड ऑल्सो मैम, जब आप लगोरी के लाइक फाउंडर हो जैसे, एंड ऑल्सो द स्किपिंग के, तो आप दो चीज अलग अलग प्रमोट कर रहे हो। सो मैम, मेरे को फर्स्ट डिटेल्स में जानना है, जस्ट ऐसे हमारी ऑडियंस को क्लियर हो कि लगोरी मैम खेली कैसी जाती है। लाइक थोड़े लोग अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने शायद वो बचपन में खेली ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपनी, जो खेलते हैं वो आपको बताते हैं कि हम ऐसे खेलते हैं, बट हम लगोरी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जिनको आइडिया नहीं है लगोरी के बारे में, Yes. और अगर उनको Lagori शायद basic. करियर भी बनाना हो तो आप वो कैसे बनाए? अभी actually Lagori Federation of India is working for promotion of the game, and they have also promoted the game in the countries like Sri Lanka and Nepal, Bangladesh, like that. So basically, we have two teams for this, and there are 7 to 9 players in each, and we also call it as 7 stones. Now, the earlier we used to play with the stones or the pieces of the tiles. Okay, now it has changed. The equipments have changed to plastic ones. Okay, and we have the hitters and the seekers. We have 7 to 9 players in one team, so two teams play, and you have to hit, and the points are according to the, it is some similar things like dodgeball are also there. You need 7 stones as well as the ball, tennis ball, and you get the points when you pile up those tiles. The only thing is equipments have changed to the plastic material, and there ओके are ओके। basically national competitions which are held. The states are also conducting some tournaments of Lagori. Ma'am, I'll just interrupt between, and I'll just invite a special guest, our CEO and founder of Sports Indie, Miss Supriya Badwe ma'am, and let's welcome her. Hello Hello. ma'am. Hello. Welcome back to our new episode. And right now, only we were talking about Lagori and also skipping rope. Like we were discussing about the past episode, and also I told ma'am that please give us some knowledge about the childhood games which we play. So, Yeah. ma'am, please first of all
you can welcome ma'am, our guest for today. Supriya ma'am, over to you. First of all, yeah. Kirti ji, very warm welcome to you on this Sports Indie platform. And really, whatever you are discussing today about Lagori and traditional games, yes, it was a major part of our life when we were student, and we enjoyed a lot and lot, and that has really given us lot of enjoyment, happiness, and of course fitness to all of us. So thanks for coming and sparing time today on this platform. Thank you so much. Uh, मैम, लाइक एज वी वर सेइंग, मैम ने जैसे बोला कि आजकल ऐसी बहुत सारी गेम्स है, हॉकी हो गई, ये सब जो मैम दिख रहा है वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो मैम, मैंने उनको यही बताया कि सुप्रिया मैम का एम यही है कि ऐसी गेम्स जो बाहर, जो शायद इतना लोगों को नहीं पता हो, ये एपिसोड के थ्रू हम बताएं। तो मैम, मेरा एक सवाल आपसे भी रहेगा, मैम, हाउ डू वी प्रिजर्व आवर ट्रेडिशनल गेम्स, लाइक मैम ने जैसे बताया कि ये ट्रेडिशनल गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये तभी से खेली जा रही है जो शायद हमारे भगवत गीता में लिखी है, जो कृष्णा भगवान खेलते थे। बट आज नए नए स्पोर्ट्स है, जैसे मैम का एक ओपिनियन है कि ये सब जो टीवी पे दिखता है वो ज्यादा पॉपुलर होता है। मैम, हाउ शुड वी प्रिजर्व लाइक गेम्स लाइक लगोरी हो गया, खो खो हो गया, स्किपिंग रोप हो गया? योर ओपिनियन ऑन दिस मैम? Yeah, Vishal, what I feel, yes, our conservative games and our traditional games has at its own immense importance. Specifically, like our generations or our prior generation, earlier generations, or maybe as you mentioned that all these games were part of our mythology, and from there, from last say like 5,000 years, we are carrying those tradition as a sports. First of all, what I feel that for these games there is those are not much expensive games. So these these can be played anywhere in a small area, so it doesn't require a large grounds and expensive equipments. It's not like that. So that is more like fun loving, or maybe entertain for like when you we used to come from school, uh, for the next 2 hours lagori was day to day part of our life. So what lagori and kho, I was in kho team also during my school days. I was captain for kho. So what these games has taught us? They taught us about teamwork, flexibility, then focus, decisions. Because see, uh, though it's they seems that rather I can say those games has not gained much popularity over the years. But yes, those games are traditional games, and should be preserved, because as of now we are seeing like children are just very they're just they have got addiction about all gadgets, TV, mobile, laptop, everything. And these games being played in smaller area, they teaches us about team, how to maintain the friendship. So these all are the outcome of playing these games. Fitness, of course, you have to run, you have to catch opponent. In kho you have to catch opponent. You have to learn about your like strategy, because in kho how you have to safeguard yourself from getting out. So you have to define your strategy, how I should play, how should I run on the ground, so that I will stay on the ground for longer time, and how it will help my team to win. So these are all the basic things which has been come as an outcome. We never thought like uh, these are the some benefits which will be helpful for us for a longer period, maybe a lifelong. But looking back, I really understand, oh, what I have gained from all these games. And really means like
it was not like that ki, lagori is used to be, we used to play in schools only, or somewhere we are going for a bigger grounds. So it was just a colony game. It's like all colony games, whoever is there, maybe elder frames, smaller frames, we all can play together. So that is the beauty of all these games. Means there is no such like age bar ki, no, I am saying fifth standard and someone my friend is in some ninth standard. So there was no age bar at that time, and we used to enjoy all these games, and they have given lot of things. So it has a very much importance. Even I know that my mother used to play with all of us. So like it was a family game also. Was like going to picnics and carrying lagori, carrying that ball, and we used to play as family also. So playing traditional game as a family helps bring us to bring family closer. It is always an exciting part of growing up for all of us, I think. And uh, and I recollect the happiness of our childhood games and gadget free days. No TV was not at all an attraction for all of us. And it was a great way to make friends and be healthy as well. So it was not like that we were falling sick every now and then, and we are just we just want to avoid playing or avoid schooling. So it was never like that. Rather, it was a boon for all of us to play, to grow, and to attend the school, to score good marks. So it was an integrated activity, I think. So that is why I feel traditional game don't require expensive equipments, and nor does it require any apparels, uniforms, and shoes. So this is all in a very whatever happens, it's in very natural way. So that's why we must preserve. And for this coming generation, when really, as I said, children are or kids are very addictive, they have addiction about these all gadgets. These small games that will give them more happiness, fun, and more, or they will be more healthy. So thanks. Thank you, ma'am. And this is why, when you speak, our audience listens. And मैम, मैं आपको यही चीज पूछना चाह रहा था, जैसे अगर आपने सुप्रिया मैम को देखा होगा जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, एंड द वे शी वाज एक्साइटेड अबाउट द चाइल्डहुड, ये हमारी आगे की जनरेशन को हम कैसे बताएं, क्योंकि हमारी जैसे सुप्रिया मैम की जनरेशन हुई, मेरी आई, मेरे में शायद मैंने सुप्रिया मैम से कम गेम खेली है, बट मेरी आगे की जनरेशन शायद उससे भी कम खेलेगी, क्योंकि अभी तो मोबाइल आ गया है, हमारे पेरेंट्स सबसे पहले मोबाइल ही दे देते हैं। आज छोटे बच्चों को पता है कि यूट्यूब कैसे खोलना है, मोबाइल कैसे खोलना है, पर उनको ये नहीं पता कि लगोरी क्या है, उनको ये नहीं पता कि ग्राउंड पे खेलने का मजा क्या है। सो मैम, मेरा सवाल आपसे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ आपसे 2 सवाल और पूछना चाहूंगा। मैं पूछता बहुत हूँ मैम, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो वन लास्ट 2 क्वेश्चंस, सेकेंड लास्ट वुड बी, मैम हम आगे की जनरेशन को कैसे एनकरेज करें, लाइक वो ही एक्साइटमेंट जो सुप्रिया मैम के चेहरे पे थी जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी खो खो के बारे में, लगोरी के बारे में, एनी अदर गेम, वो हम आगे के जनरेशन को कैसे एनकरेज करेंगे, वो आपके अलावा मुझे आई डोंट थिंक सो कोई अच्छे से बता पाएगा डिटेल में। Yes, actually, I was about to tell you the same thing. The excitement which we saw on ma'am's face. This is exactly what our traditional games give us. The memories which last forever. That experience, when we talk about it, now you could see the expressions of ma'am, the excitement which was there on her face. This is what our children need to learn. And when we focus on these traditional games, then only they will come to know about all this. So it is our duty now to get back all those games and show them to our children so that they know the importance of it. As I told you, they are on gadgets and all those things. So even some animations, now we have some video games or computer games which are common games or the shooting games. So similarly, we can also have these games in the animated forms also, so that when day to day they play those games, they can play Lagori too on the
YouTube or your video games or this. It is like that. So it is our duty now to give them knowledge about all these games which we have played earlier and what is the importance of it. जैसे कि हमारे गेम्स का जो इम्पोर्टेंस है हमको ही उनको बताना पड़ेगा और दूसरे कोई तो बताएंगे नहीं तो इट इज आवर ड्यूटी नाउ इट इज आवर ड्यूटी नाउ रादर टू टेल देम अबाउट दिस गेम्स एक्चुअली मैम मैंने आपको तो बहुत then they are going to get attracted if they don't know if we don't tell them they won't know about it so it is our duty to have some literature or some practical things about these games to them. एंड मैम आपका वो पर्पस आज मुझे लगता है पूरा हो ही गया है, क्योंकि सुप्रिया मैम ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां आपके एक्सपीरियंस हमको मिल रहे हैं एंड ऑडियंस को मिल रहे हैं एंड आई थिंक सो दैट वाज द बेस्ट टेस्ट कि आप गोवा में बैठ के हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो और इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। अब ज्यादा टाइम नहीं लेके, मुझे भी पता है आपका स्केड्यूल बहुत पैक्ड है, फिर भी आपने हमको टाइम दिया। मैम लास्ट क्वेश्चन, ना लगोरी के बारे में ना स्किपिंग के बारे में, बट एक लास्ट मैसेज आप जो हमारी यूथ को देना चाहोगे। यूथ का मतलब ये नहीं कि 10 से 12 साल के बच्चे या 10 से 16 साल के बच्चे, 10 से लेके 30 साल तक जब एक आदमी बड़ा होता है या एक वुमन, गर्ल से वुमन होती है, तो वो एक करियर पाथ चूज करते हैं मैम। हाउ यू विल मोटिवेट कि चलो ठीक है लगोरी खो खो मेरी स्पेशलिटी है, तुम्हारा इंटरेस्ट शायद कोई और स्पोर्ट्स में होगा, बट वो दूसरे स्पोर्ट्स में भी वो करियर, क्योंकि मैम सबको कॉन्फिडेंस नहीं होता आज के जमाने में, सबको सिर्फ 9 to 5 जॉब ही एक सिक्योर ये करियर लगता है, बट उसमें किसी किसी का तो इंटरेस्ट भी नहीं रहता। तो हाउ यू विल मोटिवेट, अ लास्ट मैसेज दैट यू हैव टू गिव टू आवर यूथ। बेसिकली स्पोर्ट्स को कैसे देखा जाता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, एज यू सेड 9 to 5 जॉब इज द actually correct job for us, but so we need to change our thinking also. As we know, there are many multinational companies who are getting yoga in the office. It is made compulsory for them, if I am not mistaken, ma'am, am I right? In some offices yoga is compulsory at least for 15 to 20 minutes. Some recreational games should be played. Why? Because the employee has to be always cheerful. So that is the beauty of sports, that when you play you become cheerful. Okay, so again we need to fitness. When it comes to fitness, it is very, health is wealth, and COVID has shown us, we can say COVID has grounded us again back to the ground. We know how health is important, so there is no option for sports. We have to be healthy, so we have to play, and it can be any game. It is not that a particular game. It can be, one motto is we have to be healthy, and that's why we should play. So our children should know different games and they should play, so then they will be fit. If you are not fit, you cannot do anything. All degrees are of no use if you are not fit. Health is important. Health is wealth, and health creates wealth also. मुझे बहुत मजा आ रहा है मैम, क्योंकि आपके हर एक आंसर में एक डायलॉग भी जो आ जाता है, एक लाइन भी जो आ जाती है, वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। एंड यही चीज मैं हमारी ऑडियंस को, यही चीज मैं हर वक्त हर हमारे एपिसोड में बोलता हूँ, दैट स्पोर्ट्स से सिर्फ तुम्हारा करियर ही नहीं बनता, बट अगर आपको जिम जाने का भी टाइम नहीं तो आप खेल के भी अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है। एंड नाउ लाइक वी कम टू एन एंड। तो सबसे पहले थैंक यू सो 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 मच मैम दैट आपने आज टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। एंड हम ऐसे ही, मेरी ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा, हम और गेम्स के बारे में अलग अलग एपिसोड्स में लाएंगे, हम और मैसेज करेंगे, हम और मैसेज देंगे दैट आपको करियर क्यों बनाना चाहिए और आपकी कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगी। एंड योर वी साइन ऑफ, एंड सेम स्टाइल विशाल कपाड़िया साइनिंग ऑफ। टेक केयर, थैंक यू, बाय। Yes, thank you very much for calling me on the show. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Supriya ma'am. Thank you so much.